Mic check. I'm live guys. आवाज आ रही है हमारी? Okay. Okay. Perfect. Welcome back, Janta, to the Sunday's live stream. Yesterday we have seen how we can integrate S3 bucket to the full backup of the Postgres and MySQL backups. And today we'll be looking into the decremental and the incremental backup of work ahead logs, which is being created by the PG backrest. And also, if possible, we can look after to the restoration through the backups, which is created in the S3 bucket. So yes, let's go. And today also we will be explaining about how we integrated S3 bucket on our system and how you can integrate S3 bucket and create a full, you can just upload your full backup on the S3 bucket, Amazon S3 bucket. So let's go one by one. First, I'll be explaining now about how I have integrated, how is it working right now. And yes, we have taken help of the AI, yeah, but we will also go on depth how is it working and how it's working right now. So as you can see, this is the full S3 service which we have done. So before having this S3 services, you need to have few things on your hands. You need to set up some what you say users to, and have to give some privileges to the your S3 bucket. So what you have to do is like you have to go to the Amazon Web Service first. Okay, so I need to sign in. Wait a minute. So okay. So let me give you a brief note how we have connected. First of all, it's simple that you should have a Amazon's account, root user account. Okay, and then after you have the root user account, then you have to have the IAM account. Yes, you need to create a IAM user, and we have discussed it thoroughly on the previous week's videos, so you can do check it out how we have created new user and then given the privileges of full access privileges to the user. So first of all, let's get inside the Amazon Web 3, and then we will discuss about the how we can have the, so you can see here we have the root user. You just need to log in, or you need to create account on it. I don't know, my fingerprint is not working. Okay, take care. Okay, so here we have the root user. We will just sign in. So this is my passkey. Continue. Okay, now we are logged into our Amazon AWS services. What you need to do is you need to go to the S3 bucket. You need to create the simple S3 bucket on your system on the AWS services. Remember, if your bucket is empty, you won't be charged. But if it is even though it is having something inside your bucket, it will be chargeable. So yes, you need to create this backup file. Then you need to go to the, again I need to refresh this. I hope my voice is clear, right guys? So what you need to go is you need to go to the IAM, and you need to create a user where you will give some privileges, right? Yeah, you need to create this user. You have this user here. So I have this test user. You need to go to this user. Once you have created the user, you need to go give this Amazon S3 full access to it. Once you give the full access, now you can download the the secret keys and the
what do you say, like जो भी credential, see you can go to here, that is access the key to, and where you can get the secret keys, your account numbers, everything which is needed to just to verify that it's a user which is having a full access to the S3. Now once you have got all these info, then what you need to do is you need to install few things, or you need to have few uh, uh, dependencies. Now how you can which all dependency you need. First of all, you need this dependency. Let me tell you, this is the dependency which you need right now, that is from the software.amazon.aws SDK. And after giving this dependency, you need to have some dependency management. You need to create a management where you can have a certain version. In this, we are looking up for the latest version of the AWS SDK version. Now once you are having this version, the dependencies will be installed correctly, no problem, there will be no problem. This is a simple and easy steps how you can just get Amazon S3 bucket. And if you need other services of Amazon S3, then you need to check on the Maven repository, right? After this, what you need to do is you need to go to the main dev application, where you need to not here actually, you need to have some config files. Now in order to configure files, you need to have some secret keys or something in order to pass it to the for the credentialing. You need to have this access key. Then you need this all things will be here on the this part. If you go to the create access key, then you will get the credentials. Then you need to specify the region. For now, we are in AP South 1. And then we need to have this bucket name, whichever bucket name you have in the bucket list. So you can select that. Now, after this, you have given, you need to have a configuration file for the Amazon. Now, in order to have the configuration file for the Amazon, you need to have the access key and the access key IDs and the region as well. Now here it is simple that you need to create a bean, configuration bean, and then in the S3 client you just need to have the credentials. You need to pass on these credentials in order to validate yourself, or you can validate your user. Now you just need to return this S3 client. Remember, this S3 client is very much important in order to get access for the S3 bucket. Now we have this configuration. What do we do now? Now how we are working on this, right? So yesterday we have talked about this. Let's go to Xcali draw. So once you can see here, we have drawn few things, right? So how we are implementing, let's check on it. So abhi tak, like we have been working on the local backups. We have been working on the local backups. So in this command line interface, we are giving two options to the user, that if firstly you can have a local backup, and secondly you can have the cloud backups. So we are giving two options to the user in order to create their backups. The local backups we have worked on the restoration. If you want to get an idea about how we are creating local backups, how we are restoring from the local backups, you can go and watch the previous part of the videos, which is on the playlist right there. Secondly, we are working on the cloud backups. Now how we are working on the cloud backups, this is a high level design of the cloud backups, you can say. So what we are doing right now is we are having three types of backups: full backup, incremental, decremental backup. We are not going on deep on the decremental or incremental backup because we have discussed this earlier. Now we are focusing on the full backup. What is now in full backup? We have two types of databases, that is PostgreSQL, MySQL. Okay, we have both Postgres and the MySQL. Now, after getting this PostgreSQL and MySQL, what we need to do? Now we need to run the command. Now, how to run the command? Let's go back there. And as you can see in the command section, we have two parts. That is the backup DB cloud. We are getting few things from the user which is using, and we have like which type of backup types you need, which type of data type you need, and what is the name of the database name, right? Now after getting these values, what we are doing, we are sending it to the
class which is having a backup DB function. Once we go into the class, this is a simple service class which is having an auto wire. What is mean by auto wire? This is auto wiring the object which is handled by the Spring Boot, that is the S3 services. Yeah, S3 services also we will be discussing, but now on let's focus what we are doing right now. Now in the high level design, what we have done, we are going to the full. Now we are going to the Postgres or the MySQL. Similarly, similar kind of, we are using a switch case. Now in the switch case, we are having a backup type. Which type of backup you are having? Which type of backup you need? Now in the first you need full backup, then we'll go to full. Now secondly, which type of data type database type we are using, that is PostgreSQL or the MySQL. Now in the switch case, now we have PostgreSQL, the MySQL. We are not right now focusing on other databases, that is NoSQL, that is MongoDB. Once we complete this whole project, then we can integrate, or what we'll do is I will make this open source project where you can work on this, and you can contribute to this repo if you like, and we can move further ahead. Secondly, what we are doing now, we have the PostgreSQL. Now once we are working on the PostgreSQL, what do we need? We need a file name. So how we are doing the file name? Now once we want to get a file name, if you want to generate a file name, how you will generate, how you will specify that the backup is created that is different. Like say कि 1 second बाद आपने backup create किया, then how you can get that these backups are different? You can use this system.current timeline, right? Obviously milliseconds are different, right? Whenever you are creating backup, that is that will have a different time. You can have a easy file name that a user is there, then you can have a database name underscore the timeline which backup was created. And obviously the pg dump is having the .dump file. Obviously this the file should be there. Now once this file is created, what we are going to do is, now we need to use this process executor. Now what is this process executor? The process executor is mainly where you like in shell, what you are doing, this is pg dump minus fch localhost. Now this helps us in executing the shell commands, right? This helps us in executing the shell commands. So this is how we are executing shell commands in the for the cloud services. Here we are not passing any password or something. Password will be asked automatically there, as well as now we are having a redirect error streams. Okay, then the process will start and we'll get the process. Now once we get the process, we will get the process in an input stream. Let's say कि bytes में streams मिलेंगे हमें, 010101 फॉर्मेट में मिलेंगी. दैट विल बी द आवर आउटपुट इनपुट स्ट्रीम्स. ठीक है, और ये इनपुट स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस टू क्रिएट अ बैकअप. नाउ लेट्स से कि यू आर हैविंग अ 200 MB फाइल. अब 200 MB फाइल डायरेक्टली तो आप नहीं डाल सकते, राइट? You cannot directly push the 200 MB file to the S3 services. It will get a much loaded up, right? So what we will do is, we are working here ki once we put the input streams, we are having a backup method. In this backup method, we will send this on chunks. 5 MB के chunks में भेजेंगे. If you have a large backup, then you can go for 10 MB chunks as well. Okay. So for now, what we are doing, now the input stream is stored in the pg dump stream, right? Let's say कि आपके पास एक कुआं है, that's a well. Well is having a lot of water in it. Now and you have a bucket. What you will do is, आप bucket से निकालोगे पानी, right? You will take out water from your bucket. ये input stream is a well, ठीक है? This input stream is a well, ठीक है? And इस कुएं से हम लोग पानी निकालेंगे. Pani is the input stream. Now what we are doing, we are passing this to the cloud backup in the S3 services. Now we will have a prime focus on the S3 services cloud backup method where we are passing on the pg dump stream.
ठीक है, जो इनपुट स्ट्रीम में लिया वी आर पासिंग इट टू देम एंड द फाइल नेम एज वेल. If we get any type of interruptions, then this exit code will be called out, right? तो अब क्या करेंगे नाउ, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग इन दी MySQL, जहाँ पर फाइल बन रहा है, ठीक है. प्रोसेस फिर हम लोग को सॉरी इनपुट स्ट्रीम मिलेगा. इनपुट स्ट्रीम से क्या, ये कुआं है, कुआं इन द वेल इट मींस वेल. नाउ वी विल गो टू द क्लाउड बैकअप. लेट्स से now in this method, now we are on the S3 services, S3 Java services. As you can see, we are in the S3 services. We will be using the S3 client. Now what we are doing here, now we are having the cloud backup. Let's say कि जो तुम्हारा फाइल है, बैकअप फाइल है, अब वो छोटा है, 5 MB से छोटा है, तो विल यू गो फॉर प्रोसेस की जहाँ पर चंक्स में सेंड करेंगे? नहीं. इफ द फाइल इज लेस देन 5 MB, वी कैन डायरेक्टली अपलोड द what do you say this backup file, right? Where we have created the object. This is actually a request, and then the request is sent to the S3 client. Similar kind of things we are doing in the multi-part upload. Now this is a simple upload, and we are having a multi-part upload. So here what we are doing is we are having two things here. ठीक है, we will do one thing कि इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है. ओके, इस चीज़ को सेपरेट कर देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं. ओके, एक मिनट, बैकअप मेथड है ना ये, तो इसको सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, ठीक है, रुको. We have two methods here, okay, actually. So this is okay, this is fine here. We need to move this part, right? Okay, we need to move this part. So we'll move it up. ठीक है, we are moving it up. Okay, that's fine. Okay, so this is chunks. This is interruption. If there is an interruption, that will be aborted. And there is a second one. There is a second approach. What is that second approach? Now let's see कि जो तुम्हारा फाइल है, now the file size is less than 5 MB. File size is less than 5 MB. Are you going to do means आप ये अप्रोच तो नहीं अपनाओगे ना कि आप 5 के चंक्स में डालोगे, आप मल्टी पार्ट अप्रोच नहीं अपनाओगे. दिस इज अ मल्टी पार्ट. लेट मी ड्रॉ दिस, ओके, एंड लेट मी राइट हियर इज मल्टी पार्ट अपलोड. ठीक है, ये मल्टी पार्ट अपलोड है, ये सिंगल अपलोड में काम कर रहा है. ठीक है, तो या ठीक है, तो वी आर हैविंग टू अप्रोचेस फ्रॉम हियर. नाउ लेट मी have key, okay, ठीक है, no problem. ठीक है, this is a multi-part approach जब हमारा फाइल साइज is greater than 5 MB, right? यहाँ हम लोग एक कंडीशन लिख देते हैं, फाइल साइज is greater than 5 MB, right? Okay. So this is the file size when it is greater than 5 MB, and there is a file size which is lesser than 5 MB. Then we are having two approaches. ठीक है, we are having here two approaches. Okay, it is fine. Now it will be directly uploading things on the Amazon S3. Okay, ठीक है. This is the main thought की तो दिस इज हैविंग फाइल साइज लेस देन 5 MB, तो ये डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा हमारे Amazon S3 में. नाउ इफ वी आर हैविंग द फाइल साइज मोर देन 5 MB, what we are going to do is we are dividing these file types into 5 MB के chunks पे.
Obviously you can increase it to 10 and 15 if you have a large amount of file, but we are going for a 5 MB chunks file. ठीक है, तब यहाँ क्या हो रहा है now, how this method is working, how the multiple part upload is working. Simple part upload is simple, ठीक है, there is no rocket science. What you are doing, you are having a object put request, ठीक है, यहाँ you are telling to the S3 client कि hey S3, I am gonna I want to upload the file, बैकअप फाइल. ओके, यहाँ पर बकेट नेम दे दिया, फाइल नेम दे दिया, एंड देन लेंथ दे दिया, एंड देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी रिक्वेस्ट पार्ट. ठीक है, कि ये रिक्वेस्ट पार्ट में तुम्हारा अपलोड आईडी आएगा. ठीक है, दिस विल बी योर अपलोड आईडी, एंड वंस यू गेट द अपलोड आईडी यू कैन डायरेक्टली अपलोड इट टू दी S3 का क्लाइंट में. ठीक है, द S3 बकेट पे तुम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो. दिस इज अ सिंपल पार्ट अप्रोच. ओके, now how we are approaching the multi part, how we are approaching to the multi part. Now here you can come. ठीक है, should be deleted, this should be tied to here. Okay, 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 let me delete this. दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ज़्यादा मरोड़ते नहीं है. ठीक है चीज़ों को. ठीक है, और लुकिंग नाइस. यू कैन गो अप. ठीक है, ओके, दैट इज गुड. Now that's fine. ठीक है. Now how we are approaching to the what do you say कि multi-part upload हम लोग कैसे कर रहे हैं? Now what we are doing is we are calling this cloud backup. We will be redirected to the multi-part once we check कि फाइल का साइज क्या है. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, pg dump का हम लोग हर बाइट रीड कर ले रहे हैं. ठीक है, we are reading the file size. Once we are getting the file size length, now what we can do is we can just return to the simple upload or to the multi-part upload. Now sorry, now what we are doing, we are having a multi-part upload. Now what we are doing here is we are just telling S3, this is a simple object creation. We are not telling anything to the S3. ठीक है, अरे भाई, ठीक है. Now here is the thing कि we are creating an object here. भाई क्या सीन हो रहा है, क्या हो गया इसको. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. Now here we are simply creating an object. ठीक है, we are creating an object with the bucket name and the backup file name. ठीक है, now in this section what we are doing, in this section what we are trying कि we are saying कि S3 client, hey S3 client, we are going to have a multi-part approach. We are going for a multi-part approach. Now what S3 will do, S3 will have the upload ID. Means like S3 will give back an upload ID. ये अब कहेगा hey user,
whenever you are doing a multi-part upload, please have this upload ID when you are uploading the file on chunks. So have this upload ID. Okay, now the upload ID will be there. Now what is this complete part? Now remember, this will be used at the last. This complete part will be used at last. This complete parts are used to store the e tags. Now what is e tags? Now e tags, whenever you are uploading मतलब वो temporary होता है, when you are temporarily uploading the chunks on the S3 bucket, ठीक है, then the S3 will return you an e tag. Remember, this is used to store the e tags. This will be used at the later stage. Now let's go further. This is a buffer. Now what is a buffer? Buffer is the bucket, right? Buffer is the bucket. अब कुएं में पानी है, अब कुएं से पानी निकालना, तुम्हारे पास बकेट ही इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे, ऑब्वियसली 5-5 करके निकालोगे. तो दिस इज अ बफर वेयर इट इज हैविंग अ 5 MB का साइज. Now how it is having a 5 MB size? Then you can see here we have created a final or static variable where we have defined a 5 MB size. ठीक है, ये बाइट का साइज है. ठीक है, ये बाइट का साइज है. नाउ लेट्स गो ऑन. ये बफर हो गया 5, ये बाल्टी हो गया हमारा. दिस इज अ बाल्टी. दिस इज द पार्ट 1. वी आर सेइंग कि पार्ट वाइज में जा रहा है. दिस इज अ पार्ट वाइज गोइंग. ठीक है, एंड वी हैव अ बाइट थ्रेड. Now, why we are having a byte thread? We are having a balti. Then why we are having the byte thread? Actually, let's say कि तुम 5-5 MB के फाइल को भेज रहे हो. Now, lastly बच गया 3 MB. Obviously 3 MB बच गया. अब कुएं में इतना सा पानी और बाल्टी इतना बड़ा है. Obviously जब तुम पानी निकालोगे तो उतना empty space बच जाएगा. And that empty space will also be getting uploaded. Now in order to prevent that empty space, what we are doing, we are creating a part data. ठीक है, we are creating a part data. Now we are going on a while loop कि बार बार पानी निकाल रहे कुएं से हम लोग. ठीक है, we are taking out water outside. Now what we are doing, we are having a part data. ठीक है, we are having a part data. Why is this part data? This part data will read the byte rate. ठीक है, it will read the byte rates. Obviously अब पानी भी है और थोड़ा खाली जगह भी है. हमें खाली जगह तो नहीं चाहिए अपलोड करने के लिए. What we are doing, we are copying the array. We are copying the array from the buffer to the part data. ठीक है, जहां पर we will only store the data, not the empty space. हम लोग सिर्फ पानी लेंगे, हम लोग खाली नहीं लेंगे. हम लोग बकेट का साइज ही छोटा कर देंगे. बकेट जो हम लोग निकाल रहे जिससे, उसका बकेट का साइज ही छोटा कर देंगे, उतना ही साइज का फाइल आएगा. And once we are having this array, now what we are doing, we are creating an object. Now again we are creating an object. How we are creating an object for the bucket? अब वो पानी बाल्टी है हमारे पास, अब उसका हम लोग अब बाल्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है. तो हम लोग अब बकेट उठा करके अब हम S3 क्लाइंट को दे देंगे कि लो भाई, ये मेरा 5 MB का चंक है. तो व्हाट वी आर डूइंग, we are having an upload part request, and this is an object. In this object, what we are passing, we are passing the bucket name, we are passing the key, we are passing the upload ID, we are passing the part name number, we are also passing the content का length क्या है, and then we are building this object. Now once we are building this object, we are going to upload this part. Now we are uploading the upload part request, and then we are requesting कि ये part data है भाई, ये लेके जाओ, ये स्टोर करो. मान लो अब बकेट ले रहे हो, अब बकेट को टंकी में, अब बकेट से पानी मतलब वेल से पानी निकाले बकेट में, अब वो पानी को तुम जाकर के किसी ड्रम में डाल दोगे, कहीं यूज हो सकेगा. दैट ड्रम इज द S3 क्लाइंट. ठीक है, नाउ ये वही काम कर रहा है. ठीक है, कि 5 MB का फाइल गया, 5 MB का फाइल लिया, ठीक है, अब उसको डाल दिए, बकेट में डाल दिए. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नाउ वी आर हैविंग दिस कंप्लीट पार्ट. व्हाट दिस अपलोड पार्ट रिस्पॉन्स विल गिव अस, दिस अपलोड पार्ट रिस्पॉन्स विल गिव अस अ ई टैग. अब मान लो
तुम्हारे पास एक शर्ट है, ठीक है, तुम्हारे पास एक शर्ट है। अब तुम्हारे शर्ट का बाह अलग है, चेस्ट वाला पार्ट अलग है, कॉलर अलग है, इधर वाला बाह अलग है, तो तुम्हारा सब बटा हुआ है, ठीक है। अब तुमको एक जगह उसको स्टिच करना है। तुमने नंबर कर दिया कि ये वन नंबर पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, उसके नीचे वाला तीसरा नंबर है, बगल वाला चौथा नंबर है। ऐसे तुमने जैसे जैसे उसको कपड़ा मिलता गया दर्जी वाले को, वैसे वैसे उसने नंबर डाल दिया। नाउ द ई टैग इज स्टोर्ड इन द कंप्लीट पार्ट. Now these complete parts which we have created here, a list, array list, wo we have given the e tag to the array list. Now what we are going to do, now we are giving this number है जिस तरह ऑर्डर में आया है 1 2 3 4, और you can say there is a simple example, जो बकेट निकाले तुम पानी से जो बकेट निकाले तुम उसका ई टैग जनरेट कर रहे हो। जैसे कि पहला बकेट गया, दूसरा बकेट गया, तीसरा बकेट निकाले, चौथा बकेट निकाले। Now once you are giving this bucket out, you are taking out this bucket और उसमें एक नंबर करते जा रहे हो। Now what we are getting the e tag. Once we are getting the e tag, now we are sending all of the e tag to the S3 client कि लो भाई मेरे पास इतना जमा ई टैग है, अब तुम रखो अपने पास और उसको एक जगह स्टिच करो। हो सकता है चंक्स अलग अलग ऑर्डर्स में आएंगे, चंक्स अलग अलग ऑर्डर्स में आएंगे, तुम उसको स्टिच नहीं करोगे। तुम एक जगह कपड़ा फटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है, यहाँ से फटा, यहाँ फटा हुआ है, 4 कपड़ा है, तुम उसको स्टिच करके एक कपड़ा तो बनाओगे ना, ऑब्वियसली। दिस इज द ई टैग्स। अब क्या कर रहा है, ये जो ई टैग कंप्लीट पार्ट हमारे पास था, अब वो ई टैग हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, S3 क्लाइंट को भेज रहे हैं। वो सारे का सारा ई टैग जो हमारे पास था वो हम लोग क्लाइंट को भेज रहे हैं, S3 बकेट को भेज रहे हैं कि लो भाई ये सारे ई टैग्स थे मेरे पास, अब ये सारे ई टैग को एक जगह सिमट करके एक फाइल बना दो। अभी तक टेम्परेरी ही यहाँ तक हमारा टेम्परेरी ही वो स्टोरेज में स्टोर हुआ होगा, कंप्लीटली नहीं स्टोर हुआ होगा। यहाँ पर जब हम ई टैग दे देंगे तो वो एक जोड़ देगा, सबको एक जगह जोड़ देगा, क्योंकि 5-5 MB के गैप में दिया है, 5-5 MB का चंक्स है। अब उसको एक एक करके जोड़ देगा, सबको एक एक करके जोड़ देगा ई टैग को और एक फाइल बना देगा। बस यही हो रहा है इस फंक्शन में, नथिंग एल्स, ठीक है। अब हम लोग एक्सेप्शंस होता है कि कुछ भी अगर हो गया तो वी विल अबॉर्ट द अपलोड, ताकि हम लोग को बाद में पे ना करना पड़े, क्योंकि छोटा सा भी अगर हमारा कुछ चेंज मतलब इंटरप्शन होगा देन इट विल अबॉर्ट। हियर वी हैव अबॉर्ट द मल्टी पार्ट अपलोड, अबॉर्ट दिस, अबॉर्ट द की, अबॉर्ट एवरीथिंग, ठीक है। Now this is how the things are working on the S3 bucket. I hope कि जो भी लाइव हैं you like this explanation, right? आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डायग्रामेटिकली भी हम लोग समझा पा रहे हैं कि वही है कि ये अपलोड आईडी हमें देगा, लूप में जाएंगे, ये 5-5 MB का बकेट बनाएगा, वो 5-5 MB S3 बकेट को जाएगा, फिर हमें उसका ई टैग मिलेगा, वो रिपीटेडली ई टैग हमें मिलते जाएंगे, लास्ट में हम लोग सारे ई टैग्स भेज देंगे एंड द बैकअप विल बी सक्सेसफुल। आई होप टिल नाउ जो भी अभी लाइव स्ट्रीम पे है, if you like my explanation, please do say yes or just give a heart if you like the explanation. If you like the explanation, please do give a heart, please. So now we will be going to work on the decremental and the incremental part, ठीक है। Okay. Now we are going to work on the decremental and the incremental part, right? So let's go.
We are done with the full incremental. Now we will go for the differential. एक मिनट पंखा ऑन कर. ओके, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इधर इन्फॉर्म कर दो. On this image. क्या आप लोग डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट कर सकते हैं? कहाँ पे? बकेट पे.
उससे पहले ठीक है। चेक करते हैं। Okay. We will get any issues. We will देख लेंगे। एक मिनट के लिए सीक्रेट की डालनी सी स्क्रीन बंद कर। चला के देखता हूँ ना। आई डोंट थिंक कि डिक्रीमेंटल के लिए प्रोसेस सही होना चाहिए, क्योंकि पीजी बैकरेस स्टैंजा मेन को नजर रखते हुए ये फिर डिफरेंशियल बैक क्रिएट करेगा। आई डोंट थिंक कि
हुआ गाइस? डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं क्रिएट। We need to have a configuration file change. びっくりする。まだびっくりしてる。わかる。始める前にはこんなこと考えてなかったから。अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं reaching that list for configuration file create
जी बैक रेस्ट तो टूट गया था लेकिन फाइल नहीं। हाँ, यहाँ पर है। एक सेकंड।
तो गाइस इसमें जो है ना कॉन्फ़िगरेशन वाला सीन चल रहा है और थोड़ा डर लगता है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में कि हल्का सा भी इधर-उधर हो गया तो अब तो जय श्री राम हो जाएगा गाइस। एक काम कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन रेपो है ये कहीं न कहीं तो यूज़ हो रहा होगा ना? यही तो यूज़ होता है ऑब्वियसली, यही तो यूज़ होता ही है। मगर ये है ना कि इसको छेड़ने में मज़ा नहीं आता है, इसको छेड़ते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम छेड़ दें, फिर दिक्कत हो जाता है। अच्छा एक बारी ये देखते हैं। इतना टैब क्यों? ओके, एक मिनट स्क्रीन ऑफ करनी फिर गाइस इधर थोड़ा सा ये इनकी फुल टाइम कॉन्फ़िगरेशंस ये चीज़ तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस तो हम ऐड कर देंगे, कोई सीन नहीं है कॉन्फ़िगरेशन है ना। We will create a copy into the downloads and paste. Okay, and again go to the feedback rest,
text editor which is already open. The path is this. repo path change होगा ना, repo path हमारा change होगा. repo retention हमारा 3 बैकअप होना चाहिए. Let's the AWS SKU provide does not exist in Norway. वही रहा, ये काम ही नहीं करता, एक्सपोर्ट वाला काम नहीं करता. Ding, 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 ding. एक सेकंड. We have saved a copy in the downloads. Okay. The दो configuration file for the. Okay. हमें इसकी configurations change करनी पड़ेगी obviously. Configuration change करने के लिए we will have this repo type S3. repo retention किया हुआ इधर. ठीक है जी, paste किया. repo retention नहीं है बकेट नेम तो होना ही चाहिए ना. इसको थोड़ा सा बढ़ा के क्या इसका में एंड पॉइंट बकेट नेम ऑब्वियसली ठीक करेंगे और पेस्ट हो गया. और हमारा AP साउथ बकेट में एक कॉपी किया हमने, पेस्ट किया. अब हम लोग देंगे ID के 2-3 चीज और डालेंगे, भी डाल के देखते हैं. कंप्रेशन का तो होना चाहिए. मैं सीक्रेट की के लिए स्क्रीन ऑफ. सेव कर लिया मैंने. अब एक काम करते हैं कि हमारा जो सीन यहाँ था वही सीन हम यहाँ पे कॉपी.
Let's check. Okay. कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने चेंज कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हो चुके हैं। क्या हो गया? कनेक्ट हो गए। डिफरेंशियल बैकअप क्रिएट करते हैं। कैन नॉट बी सेट मल्टीपल टाइम। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है, सेव हो गया। फिर से ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? Okay. Compression level 6. File missing error. Unable to open the missing file. That is S3 path backup main backup total. एक मिनट। क्या भेज रहा है? हाँ ठीक है, यही तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। या फिर से ट्राई करते हैं। नहीं, हमने विकेट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ सीन नहीं है। इसमें हमारा स्पैरो बैकअप ठीक है। एंड पॉइंट हमारा s3.m है। s3.path को वन स्लैश डैश पाथ। क्या है? फाइल मिसिंग, एबल टू ओपन द मिसिंग फाइल, जो कि है s3 बैकअप मेन बैकअप डॉट एक्सपो फॉर रीड। एक मिनट, एक ऐसा क्लाउड का डेल्टा वाई तो नहीं डाला था कुछ। कुछ बाकी रह गया। रीजनल पाथ कंप्रेशन लिंकिंग को साफ कर दिया है। हेलो एवरीवन, जो भी स्ट्रीम पे लाइव देख रहे हैं हमें, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन ऐड कमेंट एज वेल. आप चैट पे हाई लिख सकते हो. I'll feel good. Configuration. Stanza तो मेरा मेन ही है. आर्काइव कुछ डाल कमांड्स में. आर्काइव दे दिया हमारा. आर्काइव कमांड पर पीजी बैक रेस्ट था. ये भी देख लेते हैं. Guys, do say hi on the chat. जो भी हमें देख रहा है. Doesn't matter यार. मैं फाइल पाथ दे दो या पीजी बैक रेस्ट दे दो. Does it even matter? मुझे नहीं लगता. चलो ये चीज क्लाउड पे पूछते हैं. अच्छा 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 अच्छा. We have to run the stanza create. Okay. Okay. Stanza create. Enable to check PG when unable to connect to. आइए फिर ये वही लग रही है.
अच्छा ओके, we need to stop I think यहीं पर हमें backup.info missing, first stanza create was number one, run this stanza create first. भाई क्या बना रहे हो? अच्छा, तो भाई ये हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें है कि कमांड लाइन को यूज करके हम लोग किसी भी डेटाबेस का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल और फुल बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, फिर रिस्टोर भी कर सकते हैं यूजिंग द कमांड लाइन। और हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग शेल यूज किए हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं, स्ट्रक्चरल वाइज तो नहीं पता चलेगा, मगर हाँ, यू कैन गो टू दिस लिंक, आई एम पेस्टिंग दिस लिंक, यू कैन गो टू दिस लिंक, आई विल पिन दिस now, so do check this, this is the project's overview, and this is what we are making from scratch. भाई ये पोस्टग्रेस से क्यों कनेक्ट? पासवर्ड सप्लाई, परमिशन इशू का। तुषार पटेल भाई, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बारी जो लिंक भेजा है उसको जाकर के एक बारी पढ़ो, यू विल गेट ब्रीफली कि हम लोग क्या बना रहे हैं। और अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मज़ा आ रहा है, अगर उस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन तुमने पढ़ लिया और तुम्हें फिर उसमें पता चला कि हाँ कुछ एक्साइटिंग बन रहा है, तो यार प्लीज़ हमारे इस एफर्ट को एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन में बदल देना, दैट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प।
क्यों हर बार हम स्टांजा क्रिएट करने के टाइम पे इतना बवाल पूछता है? हर बार जो स्टांजा मैं क्रिएट कर रहा हूँ हर बार ये इशू आता है भाई। इस वाले पार्ट पे जाए, यहाँ पे स्टांजा क्रिएट करने का तो कोई ऑप्शन वो दे नहीं रहा है। मेरे भाई पोस्टग्रेस एसक्यूएल 18 तो चल रहा है।
pause video and I no server running.
भाई हमको पोस्टग्रेस से कनेक्ट क्यों करना है? हमको पोस्टग्रेस से कनेक्ट ही नहीं करना है नी। Yes.
लॉक्स चेक करना पड़ेगा। लॉक्स लॉक्स इसी लॉक्स में क्या दे रहा है, लॉक्स में चेक कैसे कर।
भाई मेरा 5432 कहाँ यूज हो रहा है? कहाँ यूज? अरे क्या मेरे, भाई ये चल ही नहीं रहा है भाई। क्या हो रहा है? Not find the IP address already in use. अरे भाई क्या फायदा, क्या फायदा?
अरे ये क्यों यूज कर? अरे भाई ये चल ही नहीं रहा, क्या सीन है बे? अब ये लॉक का फिर परमिशन सेट चेंज हो गया क्या? एक मिनट। भाई ये सारा पोस्टग्रेस क्यों लेके चला जाता है भाई? I just hope that someday someone would love me. अरे हो गया। ओके ये चीज को स्टोर कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये
Let's go to the, yes, we have the S3 path, we have archive logs, we have backups. Oh. Okay, okay. stanza चेक करने के लिए क्या था छोड़ो उसके तो कोई सीन नहीं है अगर मैं कनेक्ट करूं पोस्टग्रेस ओ इसमें नहीं है चलो एटलस let's check for atlas
ठीक है। ओके ओके, तो बैकअप हमारा सक्सेसफुल हो गया डिक्रीमेंटल का। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये चीज सेम हो गया इंक्रीमेंटल के लिए। INC ठीक है। तो हमारा इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, हमारा आराम से मस्त चल रहा है, ये कोई सीन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ भी जाएं, रिफ्रेश मारे और पीछे जाते हैं, तो ये S3 पाथ में हमारे ओके सारे लॉग्स बन रहे। बैकअप्स में जाएंगे, मेन में जाएंगे, देन वी हैव बैकअप हिस्ट्री 2026, देन वी हैव अ GZ बैकअप। ठीक है गाइस, तो हमारा जो है डिक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल बैकअप भी क्रिएट हो गया है विदाउट एनी इशू। हुआ था इशू, हुआ था, but now the issue is resolved and we are good to close this stream. ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं डिलीट इट। तो एक चीज हमें रिमेम्बर रखनी पड़ेगी कि कॉन्फ़िगरेशंस हमें चेंज करना ही पड़ेगा। There is no other options without changing any configurations. We have no other options. We need to change. ठीक है, we have properly documented the issues. ठीक है, तो जो भी इश्यूज था हमारा हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो लॉग फाइल्स में इश्यूज था हमारा, तो हमने लॉग फाइल्स को रिमूव करके and then we recreated and we have ran the stanza again. So yes, so is like lastly I want to conclude कि in order to have a cloud backup from the Postgres, you need to add the configurations for the cloud service and then only it will work, right? ठीक है, तो तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क एट नाउ। ओके, बट द थिंग इज कि अगर मैं इसको अगर सर्विस बना रहा हूँ तो पीजी बैकरेस्ट का बना लो, तो पीजी बैकरेस्ट का क्लाउड सर्विस बनाना, एंड वी हैव टू लाइक अगर हम लोग क्लाउड सर्विस वाला पार्ट बना रहे हैं मैनुअली हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर ये इशू कॉज कर रहा है, राइट? कि हम लोग मैनुअली क्यों चेंज कर।
इस तरह से तो इशू क्रिएट हो जाएगा. This will not work like right. This will not work. ठीक है. ठीक है गाइस. तो अभी के लिए इतना ही. इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल बैकअप हमारा क्रिएट हो चुका है. एंड वी आर गुड टू क्लोज दिस स्ट्रीम. आई होप so I hope ki you liked this stream. You liked what we saw today, what all challenges we had, and how we are actually setting up the S3 bucket for the decremental, incremental, and the full backup. So do hit the like and subscribe button, guys, if you like the video, if you like the tutorial. And I think we are at the end of the stage of this project where we can, and if you all want, then we can have an open source contribution also in this project. अगर आपको कुछ different ideas आ रहे हैं या फिर you have different expectations from this project, then we can have this as an open source. Okay, where you all can work on this file and give your contribution. So thank you guys, thanks for joining, thanks for the live stream. Bye.